let's continue with this question 7. It's a good number sum. It is said that the difference of square of two numbers, दो numbers के square का difference is 180. The square of a smaller number is 8 times larger number. See, it is very interesting. The relation is given. The relation is given between square of smaller number with the larger number. तो यहाँ पे हम suppose करेंगे larger number को. So let the larger number is, that is x. तो what is the square of smaller number obtain? हमें smaller number नहीं मिलेगा. We'll obtain square of smaller number. It is given 8 times the larger number. So now equation किसके बीच में है? The difference between the square of smaller and larger. तो हमें square of larger number ढूंढना पड़ेगा. Square of larger number. So the larger number is x, so the square is x square. Now the relation is given between these two. The difference between the square of two numbers. दो numbers के बीच का difference. Difference between square of numbers is 180. So obviously greater minus smaller. X square minus 8x is 180. See how the equation is so easy to form. So we will obtain x square minus 8x minus 180 is equals to 0. So now let us find out the prime factors of 180. So 18. So we know it is 3, 9 2s are, then 2 into 5. So these are the prime factors of 180. We have to get 8 by subtraction. So let's take first 3. So 9 2s are 18 and 5 2s are 10. Look at here, we obtained 18 10s are 180 and 18 minus 10. So minus 18 plus 10 will take because we have to obtain minus 8. So here the factors are x minus 18 and x plus 10. These are the two factors. So we can say that whether x is 18 or x is minus 10. As we discussed, the larger number, smaller number, here we won't consider this as a number. So we have to find out both the numbers. So the larger number, as we suppose x, so that is 18. Here smaller number suppose ही नहीं किया, the square of smaller number. Square of smaller number, that is 8x. So it is 8 into 80. So we can multiply, it's 144. That is a square of smaller number. So we can say the smaller number is 12. So the two numbers which we have to obtain, larger and smaller, so that is 18 and 12 respectively. Let us continue with the 8th number, and this is considered as a good number sum, one of the important questions of this exercise. It is said that a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. So let's find out the usual or the uniform speed of the train. So let the speed of train, as it is a speed, so it is x kilometer per hour. We discussed this kind of sum earlier also. Whenever the sum is related with the speed, we always use this formula, speed is distance upon time. तो यहाँ पे comparison time का है. So look at here, the train travels 360 km. So let's find out the time taken to cover 360 km. So as we discussed, speed is distance upon time.
So time, that is distance upon speed. So this is the time, we can say T1 if you wish to give. Now in the second case it is mentioned, if the speed of the train has been increased 5 more. So speed of train increase 5 kilometer per hour. So now we can see the new speed of the train. पहले x था, now 5 increase, so now it is x plus 5 kilometer per hour. Now let's find out the time taken by the train to cover the same journey or same distance. Formula would be the same, distance upon speed. Now this is T1 and this is the T2. So we are going to compare this to 360 upon x and 360 upon x plus 5. Remember students, one value is smaller than the other. हमें पता होना चाहिए कौन सा वैल्यू कम है. अगर ऐसे क्वेश्चंस में नहीं समझ में आता कि विच वैल्यू इज स्मॉलर, हालांकि ये वैल्यू कम है, क्यों? When the speed increase, time decrease. समझो ये लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा है. If you are not able to understand this, which one is smaller and larger, so what we will do? We will observe the denominator. Look at, this is the x value, that is monomial term. There are two terms. Look at the sign is plus here. तो डिनोमिनेटर में यहां पे प्लस है, तो वी शुड एड द डिफरेंस टाइम हियर. मतलब जहां पे डिनोमिनेटर में प्लस है तो यहां पे प्लस करना है. अगर यहां पे माइनस होता तो हम यहां पे प्लस करते. इफ द प्लस इज हियर, सो वी हैव ऐड 1. 1 क्यों ऐड किया? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि डिफरेंस, मतलब ये टाइम को दिस ट्रेन व्हेन द स्पीड इज x वुड टेक 1 hour लेस. तो यहां पे हमने +1 कर दिया बिकॉज दिस वैल्यू, दिस टाइम द ट्रेन हैज टेकन मोर टाइम. मगर यहां पे क्यों प्लस किया? बिकॉज दिस वैल्यू इज स्मॉलर, दिस वन. स्पीड इंक्रीज, टाइम डिक्रीज. सो T1 इज ग्रेटर देन T2. सो दैट इज वाई वी एड टू द स्मॉलर नंबर. मगर अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो जहां पे डिनोमिनेटर प्लस है वहां पे हमें प्लस करना है. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई एंड कन्वर्ट दिस इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस वुड रिमेन एज इट इज. यहां पे हम सिंप्लीफाई करेंगे. 360 plus this x plus 5 added with or multiplied with 1. Now first we simplify this, then we'll go for the cross multiplication. There's still the numerator as it is. Here we have the two like terms, so we can write x plus 365 upon x plus 5. Now we'll go for the cross multiplication. So this 360 is now multiplied with x plus 5 and this x is multiplied with x plus 365. Let us multiply 360 with both the terms. 360x plus 6 5s are 30 raised to 3, 15 plus, that is 1800. And it is x square plus 365x. Now I'll take this both the terms right hand side and we'll write the like terms with the like terms. 365x minus 360x minus 1800. So now the new equation is x square plus 5x minus 1800 equals to 0. Now you look at here, we have to find the factors of 1800 and we have to obtain 5. जैसा हमने आगे के क्वेश्चन में पढ़ा था, यहाँ पे अगर 2 zeros है तो यहाँ पे एक 0 होना ही चाहिए. यहाँ पे आप 18 के फैक्टर्स निकाल के 5 नहीं ला सकते. अगर यहाँ पे 15 होता तो हम वो लॉजिक यूज करते हैं. सो वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18. तो 18 मतलब 1800, तो पहले 18 के निकालेंगे. 2 into 3 into 3 and 100. So 25 4s are. So look at, these are the prime factors of 1800. ये 1800 के प्राइम फैक्टर्स है. We have to do the subtraction and we have to get 5. Remember students, हमें subtraction करके 5 लाना है. So let's do it.
So look at here. If we'll take this 3 terms together, so 3 3s are 9 2s are 18 and this 100, no it won't be possible. तो देखो स्टूडेंट्स हमें माइनस करके 5 मतलब दिस टू नंबर शुड बी नियर टू ईच अदर. ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया. So let's try one more to get it. So there are many ways to do it. So let's see that what we are trying to do it. Let's see that 5 5s are 25. 25 2s are 50. So let's keep it as a side. And 3 3s are 9. 9 4s are 36. So again we can see that still we didn't obtain 5. So we need to change it. Now let's see that what else we can go for it. Fine. So look at here 5 and 3 3s are 9. I am taking this 3 terms. So 9 5s are 45. And the rest of the terms, that is 2 2s are 4, 2s are 8, 8 5s are 45. Sorry, 8 5s are 40. So now these are the factors. 45 into 40. So now look at this, we'll obtain 5. So the factors are 45 minus 40. So we will obtain 5. So we can write direct factors. These are the rough which you can write. It's x plus 45 and x minus 40. So we can say the value of x is minus 45 and the value of x is 40. We know that speed can never be negative. So this value does not exist. So as we have to find out the speed of train, which is x, so we can write here that the speed of the train is 40 kilometer per hour. As x is positive, so we'll get the answer. The speed of the train is 40 kilometer per hour. Now the ninth number. Students, remember this question is considered as one of the very important question. बहुत अच्छा logic question है. Let's read the questions and come to the solution. It is said that two water taps, दो नल है, together can fill a tank in the given hour, that is 9 integer 3 by 8. There are two different size of tap. When they on together, they complete a tank in 9 integer 3 by 8 hours. The tap of larger diameter, मतलब जो बड़ा नल है, it takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. मगर दोनों, इसका मतलब अगर बड़ा नल आप खुला रखो तो it takes 10 hours less to fill the tank. अगर समझो कि छोटा जो नल है वो 30 घंटे ले रहा है तो बड़ा नल 20 घंटे लेगा वही टैंक फुल करने के लिए. सो दिस इज द रिलेशन गिवन बिटवीन द टाइमिंग्स ऑफ टैप टू फुलफिल द टैंक. फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. मतलब दोनों नल सिर्फ सेपरेटली हाउ मच टाइम विल टेक. सो लेट्स suppose it, let the time taken to complete or to fill the tank separately by, let's write down the smaller tap. वैसे smaller छोटा बड़ा ऐसा नहीं दिया है, with the smaller diameter ऐसा लिखा है. So with the smaller diameter tap, that is x, टाइम है, ये हम क्या सपोज कर रहे हैं टाइम, सो इट मस्ट बी आवर, क्योंकि क्वेश्चन में आवर्स दिया है रिलेशन. एंड द लार्जर डायमीटर टैप, तो हम सिर्फ लार्जर टैप लिख रहे हैं, समझने के लिए चलेगा. इसको इससे 10 घंटे कम लग रहा है, सो x माइनस 10 आर. अब देखो क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चे, इन दोनों का एडिशन करके लिख देते हैं कि दोनों के साथ में चालू करने से इतना टाइम लगा. बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द सम. वी कैन कोरिलेट दिस क्वेश्चन विद द चैप्टर नंबर 3 वन क्वेश्चन, इफ यू रिमेंबर, ऑफ मैन एंड वुमेन क्वेश्चन. मैन और वुमेन का जो क्वेश्चन था, द टाइम टेकन बाय द वन मैन टू कंप्लीट द वर्क, वन वुमेन टू कंप्लीट द वर्क. तो हम यही कंपेयर करेंगे, यहां पे रेट ऑफ वर्क के साथ कंपेयर करेंगे. Rate of work, that we know that work done, time taken.
So work done, time taken. We are going to use this क्योंकि ये जो सम है ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, सो दैट विल बी कंसिडर एज कंबाइंड रेट ऑफ वर्क. ये दोनों का टाइम हम ऐड करके नहीं कर सकते सम. चलो, सो नाउ फॉर द स्मॉलर टैप हम रेट ऑफ वर्क ढूंढते हैं. रेट ऑफ वर्क ऑफ स्मॉलर टैप मतलब 1 घंटे में कितना करेगा, तो 1/x. दिस इज द रेट ऑफ वर्क. 1 घंटे में इतना फुलफिल करेगा. एंड द लार्जर इट इज 1/x - 10. ये दोनों 1 घंटे में इतना करेंगे. दोनों साथ कर रहे हैं तो इट्स अ कंबाइंड रेट ऑफ वर्क. दोनों साथ में कर रहे हैं तो दोनों का एडिशन. अब जो हम करेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इक्वेशन मैं बनाने जा रहा हूं, क्योंकि यहां पे भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं. वो लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन इक्वल्स टू द टाइम इज गिवन. यहां पे लिखा है टोटल टाइम टेकन 9 इंटीजर 3/8 hours. So can we say that 75/8 hours? अब मैं जो आपको समझा रहा हूं वो बहुत अच्छे से समझना. ये दोनों ने जो कंबाइंड रेट ऑफ वर्क है दैट इज फॉर 1 hour. ये 1 घंटे का कंबाइंड रेट ऑफ वर्क है और ये टोटल टाइम है. तो अब हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, कंबाइंड रेट ऑफ वर्क दैट इज 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल टू, जैसा हमने किया था मैन वुमैन के सम में, वी हैव टू राइट द इनवर्स ऑफ दिस 8/75. क्यों ऐसा किया, दिस इज द टोटल टाइम. टोटल टाइम में दैट कैन फिल द टैंक. एक टैंक फिल करने में इतना टाइम लगा, मतलब इतने टाइम में एक टैंक फिल किया तो 1 घंटे में कितना फिल किया. सो दिस इज फॉर 1 hour. 1 hour कंबाइंड रेट ऑफ वर्क ऑफ बोथ द टैप इज दिस. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब सम कुछ नहीं है, इट इज लाइक द सेम सम विच वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियोस. तो हम यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम. नीचे भी एलसीएम होगा एज इट इज. In the numerator it is 2x - 10 and this is x square minus 10x. We'll go for the cross multiplication. Now 75 multiply with both the terms, so 150x minus 750, 8x square minus 80x. Let us take both the terms right hand side, so it would be 0. 8x square minus 80x minus 150x plus 750. Let us simplify this. So we got 8x square minus 230x, इन दोनों का एडिशन किया, plus 750 is equals to 0. We can observe that 2 is common. So that is 4x square minus 115x plus 375. I'll take this 2 to the right hand side. So the equation is 4x square minus 115x plus 375 is equals to 0. Now let's find the prime factors of this. Excuse me. 4 into this number. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, which I don't know how to do it orally. तो हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं. 5 7s are 35, 5s are. Now it is possible. 5 15s are. 5 3s are and 3 1s are. So the prime factors of 4, that is 2 into 2, and prime factors of this, that is 3 into 5 into 5 into 5. Now look at the students, you have to do the addition and you have to get 115. आपको 115 लेके आना है. So let's do this. हम इसको प्रोडक्ट कर रहे हैं. 5 4s are 20 and we do the product of this. 25 3s are 75. No, we can say that this addition is not 115. So we need to change it. हमें इसको change करना पड़ेगा. Now let's take another
टू गेट द आंसर. हम दूसरे नंबर साथ में ले रहे हैं. So you can see 5 5s are 25 and 2 2s are 4. 25 4s are 100 and 5 3s are 15. So you look at this, 100 into 25, 100 into 15 and 100 plus 15 is 115. So thus we obtain the factors. I'm just going to erase this. So we obtain the factors. The factors are minus 100 minus 15. As the coefficient of x square is 4, तो हम direct नहीं लिखेंगे. 4x square minus 100x minus 15x plus 375 is equals to 0. We should take out 4x common. So that would be x minus 25. We should take out 15 common as minus. So x minus 25. So we can say x minus 25 is one factor and another is 4x minus 15. Okay, so there are two possible values of x which we obtain here. So we can see that either x is 25 or we can say x is 15 by 4. So now let's see that which one is possible. As we can see right now, both, look at this, both the numbers, both दोनों possible लग रहे हैं, positive है. But come to here, larger step. If I subtract 10 from this, 25, 15 upon 4 minus 10, तो हमारा ये आंसर नेगेटिव आएगा. So remember students, that time can never be negative. So this value does not exist. मैंने reason बताया. यहाँ पे possible है, मगर when I subtract 10 from this value, the value comes negative. So we can say this value does not exist. So we can write the time taken by smaller tab, that is x, so 25 r, and larger tab, that is x minus 10, so it is 25 minus 10, so that is 15 r. So you can see this, it's a quite lengthy sum, but it is one of the most important question.